नमस्ते, मैं बेस ऑफ माय चैनल मास्टर विषय इंग्लिश एंड संस्कृत ग्रामर में आपका स्वागत है। सो स्टार्टिंग विथ आवर old topic, that is our determiner. And determiner we will conclude today the topic and our chapter determiner. So not wasting the time, we will start our topic. So we will today learn about the use. Use matlab meaning, what is the use in our of determiner in our day to day life. कैसे हम उपयोग करते हैं किसका, तो डिटरमाइनर्स का कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया था और आज मैं उसे अच्छे से बताऊंगी डिटेल्स में. व्हाट इज द यूज ऑफ द डिटरमाइनर इन आवर डे टू डे लाइफ. सो यूज ऑफ डिटरमाइनर. Okay, so I will take the help of chart for your understanding, for your base of the chapter determiner, so you can understand the chapter so easily that you will learn it for the long time. Okay, I will show you one chart based on our chapter, that is determiner. Okay, so we will start. Like like determiner, take some example. Example of determiners. Okay, we will take some and any. First we will take some and any. Okay, so some and any. Some meaning कुछ in Hindi. Any means कुछ भी. So what are you seeing on the whiteboard? The meaning of some and any. First we will learn in Hindi. Okay, some means कुछ and any means कुछ भी. Okay, so we have already taken example of some as demonstrative, adjective, or okay. In our last session of the adjective chapter, we have already discussed about how to use some as demonstrative adjective. Okay, here also we will use some. We will take some example, making the example of determiner which will make some sentence. Okay, how we will use the determiner while making sentence. Okay, in our day to day life. So some people are gathered here for picnic. Second example, some water, or you can say there is some water in the glass. Okay, I have taken two examples related to the determiner, that is some. Using some determiner, I have made two sentences. Okay, कुछ people, हम यहाँ डिनोट नहीं कर रहे हैं स्पेसिफिक और जनरल, स्पेसिफिक पर्सन और जनरल ग्रुप को नहीं डिनोट कर रहे हैं. मतलब हम डिनोट क्या करें कि कुछ आदमी,
हम उसको स्पेसिफिकली डिनोट नहीं कर रहे हैं कौन आदमी, कौन से आदमी या कौन से लोग, मगर simply we are denoting that some people are gathered here for picnic. There is some water in the glass. कितना water है? 1 liter, 2 liter, 3 liter, or 4 liter, or half liter, but we are not denoting the accurate measurement of the water. So we are only denoting that there are some water in the glass. Okay. So ये तो हुआ आपका example. These are the example I have taken how we will use the some determiner in our day-to-day life conversation or in our day-to-day life, or how we will make sentence in the grammar while using determiner. अब इसका हम some और any, some तो हो गया, अब then we will look after the any. Look forward for the any. Any means कुछ भी. Students, you can write anyone can take or can participate in the, anyone can participate in the essay competition. Okay, so this is the simplest example I have taken using the determiner any. Okay, any, from any we have made one simple sentence. Anyone can participate in the essay competition. Okay. Then second sentence how we will made. Anyone, any, कुछ भी. Okay, कोई भी पर्सन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, तो ऐसे कंपटीशन में. कौन से पर्सन यहाँ पर वो इंडिकेट नहीं किया है. आई एम नॉट indicated which type of person will participate in the essay competition. Okay, anyone can participate in the essay competition. Is there anybody in the room? So this is another type of sentence I have made. This is the interrogative sentence, means asking question related to the interrogative sentence, means asking question. Is there anybody in the room or anyone in the room? Okay, now moving to the chart. How we will understand, how you will use or learn or remember the use of the different determiners. Okay, so look at this chart. Some, any. Okay, then many, much. First I will give you the chart, then I will take some example related to the many, much and other also. Then few of you. Okay, so some is the negative. Some is the use for negative sentence. Okay, indicating that is
negative in formation. Okay, negative. Any will be positive sentence, and also the interrogative sentence. Okay. Okay. Then many and much. Much is also negative and sorry, many is negative and much is positive. It is used for number and it is used for quantity. Okay. Then few, negative sentence, positive sentence. So now we will understand how this negative sentence and positive sentence I will use for making sentence through taking some example related to the related minor chapter. Okay, some negative sentence, always we will see that there is no confirmation about the sentence whether it is indicating about something which is positive. Okay, like for example, there are somebody in the classroom who is present actually in the classroom, we are not indicating. Okay, so somebody making noise in the classroom, making noise. Okay, who is making, we have not any knowledge about that person, that who is making noise in the classroom. Positive and interrogative sentence, any is always used as positive and interrogative sentence. Interrogative sentence means asking question. Is there anybody in the classroom? Is there anybody is there? Or you can say, is the any is any bank is working on still? You can always keep this in your mind that whenever there is an interrogative sentence means related to the question, we will use any. Okay, and it will always use as positive. Okay, positive nature. Number and quantity, many. Number, I have already uh, given you the some knowledge about adjective and adverb chapter in the adverb chapter, adverb of quantity and adverb of number. There we have already discussed about how you will know that this sentence is related to the quantity or whether it is related to the number. Okay, so number means we can count, it's countable, and quantity is in inaccurate form, by which we mean that it is uncountable, we can't count. Okay, so water, milk we will take as quantity, number may person or notes or sorry anything. Okay, so person, notes, we will take some example, then you will understand it more clearly. Okay, quantity we will measure milk or water. Okay, so or you can say that it is uncountable. You can, this is, take some example like grass. Okay, we cannot measure the grass. Okay, so few, it is always in negative sentence, you can use as always as negative sentence, and a few positive sentence. Okay, so now moving to the next point, that is some any I have given you two example, then
many and much. Many boys are gathered here for physical test. Okay, many boys are gathered here for physical test. मतलब बहुत सारे बॉयज हैं. काउंटेबल है कितना हम बॉयज हम काउंट कर सकते हैं. वी कैन काउंट हाउ मेनी बॉयज आर प्रेजेंट हियर देयर फॉर फिजिकल टेस्ट. सो मेनी बॉयज आर गैदर्ड हियर फॉर फिजिकल टेस्ट. ओके, someone asked how many person are gathered for physical test. Suddenly, when someone asks you how many persons are gathered for here for physical test, you can not measure it in a few seconds or in a few time. You can always give a assumption about that many people boys are gathered here for physical test. Okay, so there are many books on the table. बहुत सारे बुक्स हैं. कहाँ पे हैं? Using there we can make sentence using determiner many books. There are many books on the table. मतलब टेबल के ऊपर बहुत सारे बुक्स हैं. तो उस बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं कितने बुक्स हैं. ओके, सो कितने हैं अभी हमें कंफर्मेशन नहीं. हाउ मेनी बुक्स. ओके, मच. हाउ मच money you require for your fees. So कितना पैसा चाहिए आपको अपने फीस के लिए. हाउ मच मनी यू रिक्वायर्ड फॉर योर फीस. ओके, मतलब मनी मनी मतलब बहुत सारे. मच ये आपका हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव. मतलब ये कितना पॉजिटिव मतलब कितना पैसा एक्यूरेटली आपको चाहिए पॉजिटिव सेंस आपके फीस के लिए. ठीक है, तो अब ये हो गया आपका एक एग्जांपल और हम लेंगे. देयर इज so much noise in the classroom. मतलब बहुत सारा बच्चे जो है वो हल्ला कर रहे हैं, नॉइज कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं. कहाँ पे? तो क्लासरूम. तो टीचर क्या बोलेंगे? देयर इज सो मच नॉइज इन द क्लासरूम. तो ये भी आपका एक सेंटेंस हो गया यूजिंग मच. तो ये अनकाउंटेबल हो गया. नॉइज को तो हम काउंट कर नहीं सकते हैं कितना नॉइज. तो यूजिंग तो कहीं कहीं हम यूज करेंगे एज काउंटेबल और कहीं कहीं हम यूज करेंगे एज अनकाउंटेबल. सो अब we will now discuss about few and a few. Few and a few. Few is positive, or you can say affirmative sentence. Okay, positive are always affirmative sentence. So few. There are few days left for
your examination. A few, this is first example, this is second. A few students will participate in drawing competition. So there are few days left for your examination. कितना दिन है? कुछ दिन है. ठीक है, कितना दिन है मतलब कुछ दिन है. हम उसको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कितना है. थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मगर few days तो है. There are few days left for your examination. A few students will participate. Sorry, few students will participate in drawing competition. वो कुछ स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे कहाँ पे? तो ड्राइंग कॉम्पिटिशन में. तो ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि थोड़े या ज़्यादा, मतलब कुछ तो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे कहाँ पे? तो ड्राइंग कॉम्पिटिशन में. तो ये इंडिकेट नहीं हो रहा है कि हम कितने दिन बाकी है, थोड़ा दिन बाकी है, ज़्यादा दिन बाकी है, थोड़े बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हम समझेंगे कैसे यूज़ करेंगे जब हम लोग फ्यू एज पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस. तो ये हम करेंगे. सॉरी, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा. और कि हम इंडिकेट नहीं करें कितने, हम ये नेगेटिव सेंटेंस होगा. और ओके, क्योंकि इंडिकेट नहीं हो रहा है कि थोड़े या ज़्यादा, मतलब कुछ तो दिन है और कुछ लोग हैं. तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव. और अब हम पढ़ेंगे वो है ऑफ यू, मतलब थोड़े कम. अ फ्यू, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, I have a few pen, मतलब कुछ थोड़े से पेन है मेरे पास. थोड़े से, मेरे पास कितना है? थोड़े से पेन है. वो मुझे पता है कि हाँ मेरे पास कितना पेन है. ये आप क्या पॉजिटिव हो गया, पता है कि हाँ भाई मेरे पास कितना पेन है. और सेकंड, a few crowd, few people gathered here for lunch. ओके, तो बहुत कम पीपल कहाँ गैदर्ड हुए? लंच पे. कितने? बहुत कम. वो तो हो गया कम, और इससे उससे ज़्यादा ये हो गया बहुत कम. उनको पता है कि हाँ कितना है, बहुत ही कम. तो ये हो गया आपका कुछ एग्जाम्पल और few से related. Then moving to the next topic, that is little, a little, little, a little, less, few. So little is always negative, it is positive. Less is negative and few is positive. It is countable, few is uncountable. Lesser and fewer.
Okay, so little, there is little difference between he and his brother. Okay, मतलब बहुत कम डिफरेंस है उसमें और उसके भाई में. There is a little water in the glass. ओके, तो कितना पानी है? तो कुछ पानी है इसमें, तो ग्लास में. देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन ही एंड हिज. तो इसमें हम किस बारे में बात कर रहे हैं? उसके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में? वो हम नहीं जानते, वो हम नहीं यहाँ पर इंडिकेट, मैंने कुछ भी इंडिकेट किया है. बस मैंने लिखा देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन ही एंड हिज. तो ये हो गया आपका एक नेगेटिव सेंस. कुछ भी आपको इंडिकेशन नहीं कर रहा है, कुछ पॉजिटिव में नहीं जा रहा है कि हाँ कौन सी चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रही हूँ. तो देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन ही एंड हिज ब्रदर. यहाँ पर हम इंडिकेट करेंगे कि कुछ पानी है ग्लास में, तो हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ कुछ पानी है. और लेसर एंड फ्यूअर, तो यहाँ होगा यू कैन से लेस एंड फ्यू. देयर इज, और यू कैन there are very less people interested in playing chess. मतलब कुछ काउंटेबल पर्सन है, कुछ पर्सन ही है जो हम काउंट कर सकते हैं. नेगेटिव है क्योंकि बहुत कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं किस क्या खेलने में, तो चेस खेलने में. तो ये नेगेटिव माइंड में जा रहा है कि हाँ बहुत कम पर्सन में इंटरेस्ट लेते हैं क्या खेलने में, तो चेस खेलने में. और अनकाउंटेबल में हम फ्यू, तेरा फ्यू पीपल और few people, or you can say present in classroom. Okay, or you can say few students present in the classroom. तो कुछ ही बच्चे हैं, मैंने उसे मेजर नहीं किया, काउंट नहीं किया, मगर कुछ बच्चे हैं जो प्रेजेंट हैं क्लासरूम में. और you can also say there are few days left for your returning from your hometown. मतलब कुछ ही दिन बाकी है आपको रिटर्न होने के लिए. कहाँ से? तो होम टाउन. और यू कैन ऑल्सो से देयर आर फ्यू days left for your preparation for your examination. सो हमने क्या समझा? तो ये यहाँ तक तो हमने समझ लिया. अब आगे ये चार्ट से आप इजीली याद रख सकेंगे. एक एक चीज़ को याद करना कि अनकाउंटेबल है कि नहीं, काउंटेबल है कि नहीं, प्रेजेंट ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस. ये आपको याद करना आसान होगा इस चार्ट से. अब either, neither, neither me or your, neither you or your sisters are coming to the function. Okay, ना कि आप, ना मतलब क्या, ना कि तुम, ना ही तुम्हारी
बहन आ रही, कहाँ पे, फंक्शन में. Okay, then we will indicate about two person, indicating in negative sense that both are not coming in the function. You can also say that they are not coming in the function. Both are not coming in the function. Or you can also write neither you nor your sister are coming in the function. Okay. Here we will how we can, or you can say how we will use neither. This is the form. Okay. Negative sentence we will use two person. So either you or your, यहाँ पर क्या यूज किया, neither और nor, or either or. Okay, in positive sense, positive sentence between, okay, either you or your sister, or you can say either you or your sister are coming in the function. मतलब वो दोनों, या आप या आपकी सिस्टर आ सकते हैं फंक्शन में, आ रहे हैं फंक्शन में, आर कमिंग. ओके, आ रहे हैं फंक्शन में. यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो नेगेटिव हो गया, और यहाँ आ रहा है मतलब पॉजिटिव सेंस जो होने वाला है, यहाँ नहीं होगा, नेगेटिव हो गया. सो आइदर यू और योर सिस्टर आर कमिंग इन द फंक्शन. ओके, तो ये आइदर हो गया और नाइदर हो गया, ये यूज हो गया इनका. एवरी हम समझते हैं कि एवरी मीन्स, एवरी का मतलब क्या होता है, सभी. एवरी, ईच, ईच मतलब प्रत्येक हो गया, मतलब प्रत्येक, मतलब एक एक स्टूडेंट. ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल डिस्ट्रीब्यूट देयर कॉपी इन द क्लासरूम. ओके, मतलब एक एक बच्चे को कॉपी कहाँ जमा करना है, तो स्टाफ रूम में या क्लासरूम में. तो ईच वहाँ यूज होगा. अब एवरी, every we will use in sense that every morning I will do the exercise, or you can say हर सुबह. every मतलब सब, सभी सुबह या हर सुबह कह सकते हैं, मतलब सभी. तो every morning we should do what? We should do exercise. So every means सभी, सभी लोग को. We're not indicating that which person. I'm not indicating each or every person, but this I am saying or writing on the whiteboard that every morning we should do exercise. This is the affirmative sentence. Okay. So each, every, neither, either, ये हमने समझा. अब यहाँ तक ये सब आपका डिटरमाइनर. these are all example of determiner. You should remember through this simple chart I have given you for your understanding. Okay, how you will make the difference between the use of different determiner and making proper sentence. Okay, how you will indicate, how you will able to indicate that whether it is going to be positive sentence, negative sentence, affirmative, negative, or interrogative sentence, or whether how you will use the different example while taking different example in the formation of sentence. Okay, so now we are concluding this chapter determiner with this example. Now from the next video we will start our new chapter, that is article. Article will be our next chapter. Okay, so now we are ending our this determiner chapter. What we have learned today we will recall today. Okay, we will recall now. Determiner we have learned all meaning,
example, types, then use. Use in many forms. I have used today determinant in many forms. Okay, बहुत सारे मैंने आपको बता दिया किस किस तरह के डिटरमाइनर कैसे उसका यूज होगा, कैसे आपका यूज करना है through the this chart. Okay, so now you can practice from their book, my channel, or from book school where you are studying. Whenever you are studying this chapter, you can now practice this technique. Now, next in the next video, we will learn about our article chapter. Now, thank you and have a nice day and have a nice vacation. Thank you.